So welcome students. इस क्वेश्चन में दिया है a function f is defined from -2 plus 1 to plus root 2 plus 1 to minus root 2 plus 1 by 2 to minus plus root 2 plus 1 by 2. This is the domain, this is the codomain. And f of x is defined by 1 minus x by 1 plus x square. This is an example of rational function. Okay. So question is f invertible? If so, find f inverse. You have to first see whether f is invertible or not. If it is invertible, you have to find f inverse. Okay. So let us try to analyze the nature of this function. ठीक है. So मैं ग्राफ से एनालाइज करने के लिए कोशिश करता हूँ. ठीक है. So let us try to draw the graph of this function. My f of x is 1 minus x by 1 plus x square. So wavy curve method से करेंगे. So what are the zeros of this function? Numerator कहाँ zero हो रहे हैं? So the zeros are x is equal to 1. What are the poles? Poles का मतलब जो x पे डिनोमिनेटर जीरो होगा, those are called the poles. 1 plus x square तो कभी जीरो नहीं होगा, so there are no poles. ठीक है. So now let us try to draw the graph of this. So इसमें critical point जो है x equal to 1, and you can see the sign of this function. अगर x 1 से बड़ा है तो न्यूमरेटर नेगेटिव है, 1 से छोटा है तो न्यूमरेटर पॉजिटिव है. डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव. So 1 से बाद the graph will be below x-axis. 1 से पहले the graph will be above x-axis. ठीक है. इस तरफ नीचे की तरफ होगा, इस तरफ वाला ग्राफ ऊपर की तरफ. Next is what happens as x tends to infinity. So limit x tends to infinity. f of x कहाँ जाएगा? So आप देख सकते हैं ऊपर इंफिनिटी है, नीचे इंफिनिटी स्क्वायर है. इन माइनस इंफिनिटी बाय इंफिनिटी स्क्वायर इज 0. एंड माइनस इंफिनिटी पे गया तो भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी स्क्वायर 0. इसका मतलब फंक्शन जो है x इक्वल टू प्लस इंफिनिटी एंड x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, दोनों में my f of x is tending to 0. इसका मतलब my f of x is asymptotically going to 0. So this is the positive side, this is the negative side, सही for the function, क्योंकि यहाँ फंक्शन नीचे है. So function, इसका मतलब यहाँ as x goes to infinity, the graph goes to 0 from the negative side. इस तरह ऊपर से 0 पे पहुंच जाएगा, मतलब ऐसा कुछ 0 पे पहुंच जाएगा. ठीक है. Next, the next analysis is there a maxima and a minima? डिफरेंशिएशन करके देखेंगे. f dash of x is equal to डिनोमिनेटर में 1 plus x square का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में 1 plus x square into minus 1 minus of 1 minus x into 2x is equal to 0. So differentiation 0 होना चाहिए. This implies for maxima and minima. So आपको equation क्या आ रहा है? -1 minus x square minus 2x plus 2x square is equal to 0. This implies 2x square minus x square is x square minus 2x minus 1 is equal to 0. So x क्या आएगा? 2 plus or minus root of b square minus 4ac by 2a, that is 1 plus or minus root 2. So एक root 2 plus 1 है, एक minus root 2 plus 1. These are the points where my function has maxima and minimum. ठीक है, somewhere here. So ये वाला 1 प्लस रूट 2 है. 1 माइनस रूट 2 आपको यहां का ही होगा, 1 माइनस रूट 2. ठीक है. ऑब्वियसली आपको देख सकते हैं ग्राफ यहां से है. सो 1 प्लस रूट 2 पे मिनिमा होना चाहिए, 1 माइनस रूट 2 पे मैक्सिमा होना चाहिए. लेट अस ट्राई टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. ठीक है. सो व्हाट इज f ऑफ 1 प्लस रूट 2 इज नथिंग बट, कैलकुलेट कर लीजिए. So 1 plus 1 minus of 1 plus root 2 is minus root 2 divided by 1 plus x square. इसको स्क्वायर किया तो 3 plus 2 root 2 आएगा, इसको 1 ऐड किया तो 4 plus 2 root 2. इसको रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, गेट समथिंग लाइक minus root 2 plus 1 by 2 आएगा. कैलकुलेट करके देख लीजिए. एंड f of 1 minus root 2 अगेन कैलकुलेट करके देख लीजिए. So you get something like root 2 plus 1 by 2 आएगा. इसका मतलब 1 plus root 2 में the value of y is
1 माइनस रूट 2 बाय, ठीक है, एक मिनिमा है, दिस इज माइनस रूट 2 प्लस 1 बाय 2 एंड 1 पे 0 हो गया, so the graph is like this, 1 पे graph is 0 and at 1 minus root 2 the graph has a maximum. And what is the value of maximum? It says root 2 plus 1 by, ठीक है. So this is the graph of this whole function. But हमारे क्वेश्चन में the function is only defined between 1 minus root 2 and 1 plus root 2. दोनों के बीच में डिफाइंड है, ठीक है. So यहाँ मैक्सिमम है, ठीक है. The graph is something like this. So you can see that if you restrict the domain to 1 minus root 2 to 1 plus root 2, ठीक है. So the function is 1 1, HLT pass for a horizontal line test. Anywhere you draw horizontal line, it's cutting the graph at only one point and on to be satisfy कर रहा है, क्योंकि the what is the range minus root 2 plus 1 by 2 and root 2 plus 1 by 2, वही कोडोमाइन दिया. So within this domain and within this codomain, my f is bijective. F is bijective, hence f inverse exists, hence f is invertible. ठीक है. मैं ग्राफ से एनालिसिस किया, ठीक है. So in the domain 1 minus root 2 to 1 plus root 2 and the codomain minus root 2 plus 1 by 2 and root 2 plus 1 by 2, my f of x is bijective, hence invertible. Okay. So once we have proved that it is invertible, next is how do you find f inverse? बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, रैशनल विद लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है. ऐसा फंक्शन को इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? Let's say this. So let's start with y is equal to 1 minus x by 1 plus x square. Cross multiplication करता हूँ. yx square plus y plus x minus 1 is equal to 0. Cross multiplication करके everything has to be brought to single side. This implies x square y plus x plus y minus 1 is equal to 0. Okay. This implies x is equal to minus 1 plus minus root of b square minus 4ac minus 4y into y minus 1 by 2a, that is 2y. So this is nothing but f inverse of y. See, अगर y is some function of x है तो if I convert this into x is some function of y, this is nothing but y inverse, f inverse, that is equal to minus 1 plus or minus root of 1 minus 4y square plus 4y by 2. So this is my x. But it's not the final answer because इसमें minus 1 plus or minus, you have two functions. You have two functions. So आप डिसाइड करना है कौन सा सही है, प्लस सही है क्या माइनस सही है. So उसके लिए आप क्या करना है? So जो इंटरवल में हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, समथिंग लाइक if you take this function f of x, when x is equal to 0, अगर x 0 है तो y कितना है? 1 है. So इनवर्स फंक्शन में अगर y 1 है तो x 0 आना चाहिए, ठीक है. So let us try to see x is equal to, when y is 1, x has to be equal to 0. 1 पुट कर लीजिए. So आपको minus 1 plus or minus 4 plus 4 कैंसिल हो जाएगा. root 1 is 1 by 2 into 1 is 2. So minus 1 plus 1 by 2 किया तो x equal to 0 आ रहा है क्या? minus 1 minus 1 by 2 किया तो x equal to 0 आ रहा है. So you can very clearly see that when y is equal to 1, x has to be equal to 0. So 0 कौन सा साइन लिया तो आ रहा है? प्लस साइन लिया तो आ रहा है, ठीक है. Hence the inverse of this function is the function with plus sign. So minus sign को डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है. So what is my final inverse of x, inverse of this function? So f inverse of y is equal to minus 1 plus root of 1 minus 4y square plus 4y by 2y. This is my inverse of y. So what is f inverse of x? F inverse of x is equal to, just y के प्लेस में x पुट कर लीजिए, minus 1 plus root of 1 minus 4x square plus 4x
by 2x. So this f inverse of x works at all the values of x except when x is equal to 0. X is equal to 0. Okay? So when x equal to 0, this is when x is not equal to 0. अगर x equal to 0 है तो f inverse of कितना होना चाहिए? अगर यहाँ 0 है तो यहाँ क्या होना चाहिए? किसके लिए? f of what is equal to 0? f of 1 is equal to 0 say. So x equal to 0 है तो f inverse of x has to be 1. Okay? Because this function is not defined at x is equal to 1. X equal to 0. So x not equal to 0 है तो this function works. If x is equal to 0, you have to write it as f inverse of x is equal to 1. So this is the inverse of my f of x is 1 minus x by 1 plus x square within this domain and this codomain. So you can see that the complete function is not bijective. Only if you restrict the domain, then it becomes bijective. ठीक है, इसलिए आपको डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर लिया इस क्वेश्चन में. थैंक यू.